Hello friends, welcome to English Minds. Today we will discussing on allegory. Allegory क्या है? Allegory एक साहित्यिक विधा है जिसमें किसी कहानी, कविता या नाटक के सतही अर्थ के साथ साथ एक गूढ़ अर्थ भी छिपा होता है। इसमें पात्र, घटनाएं और वस्तुएं प्रतीकात्मक रूप से किसी नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक या दार्शनिक विचार को दर्शाती हैं। जैसे प्लेटो की एलेगरी ऑफ द केव सत्य और अज्ञानता का रूपक है। जॉन बनियान की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म रूसी क्रांति का राजनीतिक रूपक है। एलेगरी एक साहित्यिक तकनीक है जिसमें किसी कहानी, कविता, साहित्य, नाटक या उपन्यास के सतही अर्थ के साथ साथ एक प्रतीकात्मक अर्थ भी होता है। यह मल्टीलेयर्ड बहुस्तरीय अर्थ प्रस्तुत करती है। इसमें पात्र और घटनाएं किसी बड़े विचार, नैतिकता या सिद्धांत को दर्शाते हैं। इसे आमतौर पर डायडेक्टिक या उपदेशात्मक उद्देश्य से लिखा जाता है। यह कला, साहित्य और दर्शन में गहरी व्याख्या की संभावना प्रदान करती है। एलेगरी के प्रकार: पॉलिटिकल एलेगरी, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एलेगरी, फिलोसॉफिकल एलेगरी एंड सोशल एलेगरी। राजनीतिक अलंकार किसी राजनीतिक विचार, क्रांति या सत्ता संघर्ष का रूपक है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म रूसी क्रांति का प्रतीक। रिलीजियस या स्पिरिचुअल एलेगरी किसी धार्मिक या नैतिक विचार का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे जॉन बनियन की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ईसाई आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा। फिलोसॉफिकल एलेगरी दार्शनिक अवधारणाओं के प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करती है। जैसे प्लेटो की एलेगरी ऑफ द केव सत्य और अज्ञानता का प्रतीक है। सोशल एलेगरी समाज की विसंगतियों, वर्ग संघर्ष या मानवीय व्यवहार को दर्शाने वाली कथाएं। एग्जाम्पल: विलियम गोल्डिंग की लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज सभ्यता और मानव सभ्य स्वभाव का एग्जाम्पल। साहित्य और कला में एलेगरी का महत्व: यह लेखकों को अपने विचारों को गहराई से व्यक्त करने का अवसर देता है। पाठकों को गूढ़ अर्थों को समझने और व्याख्या करने की प्रेरणा देता है। साहित्य, दर्शन, धर्म और राजनीति के बीच संबंध स्थापित करता है। एलेगरी सिर्फ एक साधारण सी कहानी नहीं होती, बल्कि यह कई स्तरों पर गहरे अर्थ को समेटे रहती है। यह हमें सतही घटनाओं के पीछे छिपे बड़े विचारों को समझने में मदद करती है, चाहे वह प्लेटो की उपमा, ऑरवेल की एनिमल फॉर्म, दांते की द डिवाइन कॉमेडी। सभी हमें किसी न किसी गहरे अर्थ और सत्य से अवगत कराती है। यह तकनीक साहित्य को रोचक और प्रभावशाली बनाता है, जिससे लेखन और विचारों को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत कर पाते हैं और पाठकों को समाज, राजनीति, दर्शन और धर्म पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पर हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हाट इज एन एलेगरी? ऑप्शन ए, अ symbolic narrative with multiple meanings. Allegory is a story with both a literal and symbolic meaning, conveying deeper message
about morality, politics, and philosophy. What of the following best defines an allegory? Option A, a story with a literal and a deeper symbolic meaning. Allegory used extended symbolism to represent abstract surface story and underlying message. Which literary term is most closely related to allegory? Option A, symbolism. Allegory uses extended symbolism to represent abstract concept. In an allegory, characters often represent option 2, abstract ideas or moral qualities. Allegorical characters symbolize ideas like virtue, greed, or freedom. Which of the following is not a characteristic of an allegory? Option 3, it relies only on literal interpretation. Allegory always has deeper symbolic meanings beyond its literal story. Allegory is commonly used in which type of literature? Option first, fiction and poetry. Allegory is a popular narrative technique in stories, poems, and plays. What is the primary function of an allegory? Option 2, to convey hidden meaning and moral lessons. Allegories are used to discuss complex ideas through simple storytelling. Which term refers to a short allegorical story with animals representing moral lessons? Option first, fable. Fable likes Aesop fables use animal characters to teach morals. Which famous philosopher described allegory as a means of teaching truth? Option A, Plato. Plato's allegory of the cave illustrate knowledge and perception. Which of the following works is a classical example of allegory? Option first, the Divine Comedy. Dante's The Divine Comedy is an allegory of the soul's journey towards God. Plato's allegory of the cave symbolize option first, the search for truth and knowledge. John Bunyan's The Pilgrim Progress is an allegory about option first, the Christian journey of salvation. George Orwell's Animal Farm is an allegory for option first, the Russian Revolution.
Dante's The Divine Comedy is an allegory of option first, the soul's journey through the afterlife. Edmund Spenser's The Fairy Queen is an allegory about option first, the virtue and moral values of England. William Golding, Lord of the Flies, is often read as an allegory of option A, human nature and civilization. Gulliver Travels by Jonathan Swift is an allegory by satirize option A first British politics and society. Which American writer is known for using allegory in The Scarlet Letter? Option A Nathaniel Hawthorne. Franz Kafka's The Metamorphosis is often interpreted as an allegory of option A isolation and existential crisis. Which of the following is an example of an allegory? Option A Animal Farm by George Orwell. What are the two main types of allegory? Option A political and moral. Which of the following is an example of political allegory? Option first Animal Farm by George Orwell. Which of the following is an example of moral allegory? Option A The Pilgrim's Progress by John Bunyan. A sustained allegory is also called option A an extended metaphor. The use of personification is common in allegories because it gives abstract ideas human qualities. Which literary device is most closely associated with allegory? Option A symbolism. Which of these is not a common feature of an allegory? Option B a single interpretation only is not a common feature of an allegory. In literature, a character who represents a specific idea or value is called option A symbolic figure. A parable differs from an allegory because it is a shorter and focuses on a single moral lesson. In medieval literature, allegorical plays were often called option A morality plays. In Indian literature, which
Epic is often considered allegorical. Option A, the Mahabharata. The Bhagavad Gita can be interpreted as an allegory about. Option A, the battle between God, good and evil within oneself. Which of the following is an example of a religious allegory? Option A, the Divine Comedy by Dante. Which Shakespearean play is often interpreted as an allegory about power and corruption? Option A, The Tempest. William Blake's Songs of Innocence and Experience are allegories about. Option A, the duality of human nature. Herman Melville, Moby Dick is an allegory of. Option A, the human struggle against fate. The Mask of the Red Death by Edgar Allan Poe is an allegory about. Option A, the inevitability of death. In Samuel Taylor Coleridge, The Rime of Ancient Mariner, the albatross is an allegory for a burden of guilt and punishment. In T.S. Eliot, The Wasteland, the barren landscape is an allegory for. Option A, spiritual decay and modern disillusionment. In which modern dystopian novel is allegory used to critique totalitarianism? Option A, 1984 by George Orwell. Every Man, a medieval morality play, is an allegory for. Option A, The Journey of Life and Death. In Dr. Jekyll and Mr. Hyde, the two personalities are an allegory for. Option A, the dual nature of humanity. The Hunger Games can be seen as an allegory for. Option A, government control and social inequality. Which famous poem by P.B. Shelley is often read as a political allegory? Ozymandias. In an allegory, objects, events, or people symbolize abstract concepts or ideas. Which allegorical character represents death in literature? Option A, the Grim Reaper. In allegorical literature, darkness often symbolizes ignorance and evil. What is a philosophical allegory? An allegory that conveys deep philosophical ideas. Which of the following novel by Aldous Huxley is an allegory about a dystopian novel, Brave New World? The main purpose of allegory in literature is to. Option A, convey deeper symbolic meaning. Thanks for watching. I hope you like this video. If you found this video helpful,
Don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Stay tuned for more informative content and make sure to hit the bell icon. Never miss an update. See you in the next video. Thank you.